गया है अब। तो सरकार का भी इसमें पूरी तरह से उसका सपोर्ट है। पर अगर मैं इस बजट में ऑब्वियसली इसकी जो हेडलाइन जो होंगी आम आदमी के लिए, ये जिसकी आपने जिक्र की, पर मैं ये समझता हूँ कि जो इस बजट को अगर हमें पूरी तरह से उसको समझना है, इसकी जो मैक्रो इकोनॉमिक फिलोसॉफी है उसको हमें समझना पड़ेगा। और वो मैक्रो इकोनॉमिक फिलोसॉफी मैं समझता हूँ कि एक तरफ है वित्तीय अनुशासन, दूसरी तरफ है टैक्स रेजीम का सुधार, और तीसरा और ये है कि उस वित्तीय अनुशासन के अंदर रहते हुए भी जो कैपेक्स में जो 33% का जो इजाफा जो ऐलान किया गया है, मैं समझता हूँ ये तीन चीज जो है हमें एक साथ देखना पड़ेगा। और चौथी चीज जो है आपने जो कहा कि जो टैक्स रिलीफ का है, तो चारों जो स्तंभ जो हैं इस बजट में, उसको हमें पूरी तरह से समझना होगा और पूरी तरह से इसका ऐलान मतलब पूरी तरह से इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। एक कह दूं कि जो टैक्स कलेक्शंस की जो प्रोजेक्शंस की गई हैं वो सिर्फ 11-11.5% वृद्धि की गई है, तो मैं समझता हूँ ये कंजर्वेटिव है। तो जो निर्मला सीतारमण जी का बजट पिछले 2 साल का बजट हमने देखा है, उस बजट में जो एक अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी का जो एक समन्वय था वो अभी भी बरकरार है। मैं समझता हूं आमतौर पे ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी ना कि आमतौर पे प्रोजेक्शन बहुत ऊपर होता है और एक्चुअल जब डिलीवरी होती थी तो बहुत नीचे होती है। हमने 2014 से उसी पहले में उसी देखा तरह से होगा। उन्होंने जो वित्तीय जो घाटा का जो ऐलान किया इस साल का, उन्होंने 6.4% का ही दिखाया है उन्होंने। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल, क्योंकि वो इजीली वो उन्होंने जो खर्चे की जो उसके ऊपर जो रोक लगाई है और कैपेक्स को भी बढ़ाया उन्होंने, मैं समझता हूँ ये एक प्रैग्मेटिज्म है। और स्टेट्स को उन्होंने इस बार मैं समझता हूँ कि और भी थोड़ी बहुत छूट दी है। सरचार्ज की घटाना स्टेट को भागीदार बनाया। हाँ, स्टेट्स को उतना नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान जो होगा सरचार्ज को घटाने से, जो एकदम जो हाई एंड जो HNI इंडिविजुअल जो हैं उनका 42.7 से 39% में ले जाना, ये अपने सेंटर ने अपना हिट लिया है। ये तो स्टेट्स को उतना हिट नहीं होगा। अशोक, इसको माइक्रो लेवल पे हम डिस्कस करेंगे टीना, लेकिन इन्होंने जो अशोक ने खास बात बताई वो ये है, अगर हम देखें जो 7 सप्तऋषियों की बात आप कह रही थी, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, क्योंकि निर्मला जी ने एक बात बहुत साफ तौर पर कही है कि अमृतकाल का पहला बजट है, पहली सीढ़ी है, हमें अगले 25 साल जाना है। जब भारत 2047 में आजाद भारत 100 वर्ष का हो जाएगा, उसकी प्रथम सीढ़ी है। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, कैपेक्स जिसे हम कहते हैं, वो 33% उसमें इजाफा दिया गया है। 10 लाख करोड़ से बढ़ाते हुए अब इसे 13.7 लाख करोड़ किया गया है। और ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि न सिर्फ इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो सरकार की अभी प्राथमिकताओं में एक है, बल्कि हर दिशा में विकास होगा। और जो सरकार का कहना है कि समावेशी विकास हो और हम अंतिम पंक्ति तक के लोग पहुंचे, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बढ़ेगा। We'll continue, and Mr. Bhattacharya, I'll come back to you. But in the meanwhile, let me also introduce another guest who's joining us in the studio, Professor Charan Singh, CEO, IGRO Foundation. Before we proceed and discuss, analyze each of these aspects, the 7 key priorities that the Finance Minister had laid across, Professor, your first remarks on the budget. Do you see the Finance Minister building up on the reforms that this government has, done over the years, or it's a more forward-looking, capitalizing and sort of, laying a roadmap for India at 100? Absolutely, it's an excellent budget. This is amazing how she has achieved it. The first and foremost thing, as I look as an economic professor, is growth, and this is growth-oriented, and that's reflecting from her figures directly. If the fiscal deficit is coming down from 6.4% to 5.9%, it is obvious that there is tax collection is high, tax buoyancy is there, and growth is being recorded. If I look at the sectoral analysis that she has presented today, she has taken care of the employment, she has taken care of women. Female labor force participation in the country is very low. She is using the self-help groups to increase that, increase entrepreneurship amongst the women.
She has taken care of the youth. She has spoken about the startups. I think this is an amazing budget. And the most important thing when you talk about growth-oriented budget is the tax slabs. And she has taken care of the personal income tax too. So my first reaction is this is a budget which will take care of the industry because of infrastructure. It will take care of individuals. Tax slabs are low now. She has given concessions even to the senior citizens. So that means the banking sector will also benefit. In any growth model, they'll tell you two things, finance and employment. On the finance, she has again spoken financial sector. India, as it is a very stable financial stability is very high, but she has spoken about the financial sector and she says they're going to revisit the banking and the non-banking and the RBI Act and look at how they can strengthen the financial न्यूज चैनल का हम लोग So to करेंगे me, my overall reaction would be this budget gets 11 out of 10. Okay, Professor, the fact that, when we talk about inclusive growth and the prominent role going forth of women and youth particularly. So what are the new initiatives that the finance minister has sort of, laid out to increase the participation of not just more and more women, but also to capitalize on the advantage of demographic dividend for India? Yeah, exactly. The startup incentives that she's given, even in the tax slabs that she has said that if you're doing entrepreneurship, I'm going to enhance from 7 to 10 years. There's a tax benefit there. I think that's amazing. Now, quite a bit of youth get employed, self-employment. And on the self-employment too, she has given concessions there. On MSMEs, she is announcing concessions. So this is where I think the youth is going to get engaged actively into the whole system. There has been emphasis on digital thing. And please remember the youth are far more comfortable with the digital world. And therein also I see lots of things happening there. On the skilling, again, she has emphasized a lot on how skilling is going to get enhanced across the spectrum. I think that is going to help again the youth. So to me, female labor force participation and the youth, which taps the demographic dividend of the country, is rightly placed by the सांसद अच्छी ना बिल्कुल। और अशोक, हम आगे बढ़ते हैं, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आते हैं। बहुत ही सही तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को भी टैकल करने की बात वित्त मंत्री ने, जिससे कि ना आपका ग्रोथ अफेक्टेड हो, ना बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन पे असर पड़े। सारी चीजों को एक तरीके से हम बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर हम देख रहे हैं। देखिए, जो फिस्कल डेफिसिट की जो आपने बात की, उसमें हमने ये देखा है कि जो फिस्कल कंजर्वेटिज्म जो है उसका पूरा हमें एहसास मिला है कि 6.4% कहा गया, तो 6.4% में रुकेंगे हम, और अगले साल में 4.5% को देखते हुए, और पार्लियामेंट की सदन के पटल में उन्होंने पूरा एक ऐलान किया है कि वो 4.5% के ऊपर 4.5% के ऊपर वो पूरी तरह से वो कमिटेड है। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐलान है, और उन्होंने स्टेट्स को भी उसी तरह से एक एश्योरेंस दिया है कि आप भी अपना खर्चा बढ़ाइए। 0.5% जो आपकी जो फिस्कल डेफिसिट की टारगेट है 3.5%, वो लिंक्ड रहेगी किस तरह से आप पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करते हैं। तो ये सारे जो रिफॉर्म लिंक्ड जो एलोकेशंस जो हैं स्टेट्स के लिए, ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक इंडिकेशन। और हम कहना चाहेंगे कि आम जनता को पिछले 8 साल से जिसका इंतजार था, जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वो उम्मीद पूरी कर दी है। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था का ऐलान किया है। नए टैक्स सिस्टम में आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर अब 5 कर दी गई है। इसे और सुविधाजनक बनाया गया है। अब 7 लाख की सालाना आमदनी पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब की सीमा 5 लाख रुपए थी। नए टैक्स सिस्टम के मुताबिक 3 से 6 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स। अगर आपकी कमाई 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच है तो आपको 10% की दर से टैक्स देना होगा। 9 लाख से 12 लाख की आमदनी पर 15% टैक्स, और 12 से 15 लाख की और 15 लाख से अगर ज्यादा आप, तो उस पर 30% टैक्स देना होगा। इसे लगातार हम अपने ग्राफिक्स के माध्यम से भी देख रहे हैं, और ये टैब को 6 से 5 भी किया गया है।
एक तरीके से मैं देख रहा हूँ डॉक्टर चरण सिंह कि हर तरीके से ईज ऑफ डूइंग थिंग्स की एक व्यवस्था की जा रही है। आप देखें कि टैक्स फॉर्म को भी बदला गया है, जो एक बहुत झंझट लगता था कि कितने क्लिक्स दबाएं, कहाँ जाएं, कैसे जाएं। अब वो सारी चीज़ें, ये भारत के लिए न सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, बल्कि ईज ऑफ डूइंग एवरीथिंग हो रहा है। बिल्कुल हर्ष, बट इससे पहले कि प्रोफेसर इस सवाल का जवाब दे, एक बार सुन लेते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एग्जैक्टली क्या कहा, ताकि वो दर्शक जिन्होंने बजट प्रेजेंटेशन मिस कर दिया हो, आइए सुनते हैं कि उन्होंने टैक्स रिलीफ किस तरह से दिया है और जिसका सीधा फायदा हजारों इनफैक्ट फैमिलीज को होगा जो कई वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे। आइए सुनते हैं। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs 2.5 lakh. I propose to change the tax structure by reducing the number of lakhs to 5 and increase exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. Yes, Professor. Firstly, the slabs have been reduced. That makes life easier. Secondly, the tax rates have become multiples of 5 and 10. Very, very easy to compute. Some of us have been arguing this for a very long time. Direct taxes, indirect taxes, GST. Why don't you think in terms of the last man in the village shop? And he knows, okay, 5%, 10%, 15, 20, and my job is done. So, firstly, the slabs getting reduced, the multiples of 5 and 10 coming in, very easy to understand. If you notice, even the presumptive tax, she has done a great job. So, to a great extent, now MSMEs and professionals don't have to worry about the tax slab at all. Presumptive tax देने से सबको लाभ हो गया. तो मुझे लगता है कि जो अच्छा उसके ऊपर द पीक टैक्स रेट जो 2.5% था तो उसको रिड्यूस किया एंड 37 से 25% किया, उससे भी अगेन अ मल्टीपल ऑफ 5. तो मुझे लग रहा है कि जो आपने ठीक कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह ईज ऑफ डूइंग एवरीथिंग. तो जो टैक्स से एक डर लगता था कि कैसे कैलकुलेट करना है, कितना होगा, किस परसेंट, वो सब नहीं रहा. सीधा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया. स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर ये मेरी इनकम है 5% या 10% 15% से उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ. इकोनॉमिक्स में एक लेफर कर्व का कॉन्सेप्ट होता है. आमतौर पर लोग डरते हैं कि अगर टैक्स रेट कम हो गया तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, पर यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है. टैक्स रेट सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा लोग आ जाते हैं, टैक्स देते हैं, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादातर आगे ज़्यादा बढ़ जाता है. मुझे लगता है इस टाइम पे सरकार ने यही चीज़ मन में रखी है कि टैक्स स्लैब्स को कम करके सिंप्लीफाई करके. वैसे वित्त मंत्री जी ने उस टाइम पे ये भी बीच में अपनी भाषण स्पीच में कहा कि किस तरीके से हम लोग 90 डेज से 16 डेज तक ले आए हैं प्रोसेसिंग, और कुछ तो हम लोग विद इन 24 आवर्स कर देते हैं. तो उससे टैक्स पेयर को भी एक विश्वास बन जाता है विद इन अ शॉर्ट टाइम. अब ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं रहती. मैंने खुद कैलकुलेट किया और अभी मुझे 24 घंटों में या कम से कम 15 दिन में पता लग जाएगा कि मेरा टैक्स सबमिशन ठीक रहा है कि नहीं. So tax administration in general, I think, has been simplified. Okay, a related question, Mr. Bhattacharya, I'll take from you, because now the new tax regime becomes the default system. Is it still possible to avail the benefits of the old tax regime? Has the finance minister made that clear also? The indication that I got clear answer, but the indication is that the government will treat the new tax regime as the default regime, but the old regime will not go away. But if you compare under the new regime, you will see that
every income slab has got a benefit under the alternative tax regime. So there will be natural migration of people from the exemptions regime to the non-exemption regime. So I think it has been very carefully drafted. The flaws in the original scheme of 2020 has been addressed very largely, and as the finance minister rightly said, that if somebody is drawing an annual income, taxable income of 9 lakh, earlier system, that person would have had to pay a tax of around 60,000 in a year. Now he or she will 45,000. Similarly, the case of 12 to 15, anybody who's earning 15 lakh, he or she had to pay around 1.5 lakh, but now it is only 1.07 lakh. So the gains are there. So there will be natural, attraction and migration to this scheme. So I see this also very intelligently done, because you are trying to make the scheme more attractive for those who are at the lower end of the spectrum, in the income spectrum. Now, there are two reasons why I call it intelligent. One is that the government's revenue hit will be relatively less, because as you know, that almost 70% of the government's in individual income tax collections are coming from the top 30%. Yes. And so the lower one is so the government's revenue hits less relatively. And second, this is the segment. This is the segment which was worst hit during the pandemic and things. So therefore, this also can be treated as a kind of a demand push and a kind of a fiscal stimulus of sorts, so that the people will have at least 45,000 rupees extra in a year, and that can hopefully will help revive demand in an economy that really needs demand push. Sure. And I have no doubts that the new regime will now become the default regime for everyone, because it's so easy to do. और अब चलते हैं अपने संवाददाता नव विक्रम सिंह के पास। नव विक्रम सिंह सुबह से ही संसद भवन में और वित्त मंत्रालय में बजट को फॉलो कर रहे हैं। नव विक्रम, यस नव विक्रम, आपसे तो पहले आप जानते हैं कि बिहार से सांसद हैं, और इस समय एग्रीकल्चर को लेकर मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर को लेकर जो तमाम सरकार ने जो योजनाएं बताई हैं, जो खाका खींचा है, उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये वर्तमान बजट के लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ। देश के किसानों की तरफ से, गरीबों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, बेरोजगारों की तरफ से, मध्यम वर्ग परिवारों को तरफ से, नौकरी करने वालों की तरफ से, और खासतौर पर कृषि की जब आपने बात कही तो सचमुच में ये पिछला 3 साल का जो कोरोना काल था, पूरे दुनिया नष्ट हो गई, अर्थव्यवस्था। आज हम लोग भी कष्ट में थे, मगर उसके बावजूद अगर देश को संभाला है और लोगों को भूखे नहीं रहने दिया है, तो ये और नहीं अन्नदाता किसानी है, कृषक ही है। उसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया है, अद्भुत है। और किसानों के हित के लिए, मछुआरों के हित के लिए, पशुपालकों के हित के लिए कई योजना, कई कार्यक्रम जो पहले से चल रहा था, उसमें जान देने का काम किया है, उसमें और मजबूती प्रदान करने का काम किया। विपक्ष का जो कहना है कि बजट एक तरह से जो पुरानी योजनाएं हैं उसी को बढ़ाया गया, विपक्ष आपके इस तर्क से सहमत नहीं है? देखिए, मैं विपक्ष को तो कभी हम लोग सहमत नहीं करवा सकते, क्योंकि विपक्ष का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। हर चीज में उनको नकारात्मक चीज समझ में आता है। ये बात सही है कि हमारा जो योजना है, पिछले 9 सालों से हमारी सरकार काम कर रही है, 8 साल से 9 साल से काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनका विजन है, उसी के वजह से देश आज इस स्थिति में है कि दुनिया के नेतृत्व करने योग्य हो गया है। और देश, दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था, बड़े बड़े देशों की व्यवस्था खराब हो गई, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी इसी विजन के कारण, पुराने नए कार्यक्रमों की वजह से देश जहां तरक्की कर रहा है, जहाँ हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पर प्राप्त कर ली है। आने वाले दिन में ही इसको हम और आगे ले जाने का कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं समझता हूँ कि ये बजट
बहुत ही सकारात्मक है, देश हित के लिए है और सबके हित के लिए है। कोई वर्ग, कोई तबका नहीं है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने नहीं सोचा। और खास तौर पर जो मध्यम वर्ग है, जिसके आसार लगाए बहुत पहले से थे, 5 लाख तक का जो स्लैब था बढ़ के 7 लाख हो गया। अब 7 लाख रुपए तक कमाई करिए और कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हर्ष जी, जो रामकृपाल जी ने बताया कि ये ख़ास तौर पर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं और ख़ास वो लोग जो लोग की अभी टैक्स के दायरे को लेकर ख़ास तौर पर नज़र थी, उनके लिए बेहतर है, साथ ही कृषि के क्षेत्र के लिए बेहतर है। अगर आपका कोई सवाल हो तो बताइए। नहीं, बहुत शानदार नवक्रम आपने रामकृपाल यादव जी के साथ कृषि और आम जनता का ये किस तरीके से बजट है, बहुत शानदार चीज करी। In fact, we will continue to take comments from the panelists who are sitting with us on the agriculture also. But in the meanwhile, another guest, Mr. Sachin Kumar Sharma, who's working as associate professor at the Center for WTO IIFT, is also. Professor Sharma, delighted to have you with us on Sunset TV. Your first comments on the budget. The BJP MP you just heard described it as forward-looking, inclusive growth. How would you describe the union budget for 2023-24? Yeah, thank you. This is excellent budget, and how to effectively implement Sabka Saath, Sabka Vikas, and especially with the agriculture. The government has focused on many things, especially the one of the important thing is the infrastructure, because that is the most important thing. And if you see the if you see the progress from the past sport program schemes, there are excellent programs were implemented by the government of India and the PM Kisan, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. These type of programs have helped in increasing the income of the farmers. The one important aspect for the farmer income and for the welfare is that it is well known that many of the farmers in India, farmers are small and marginal farmers with land holding size very, very low. Now these farmers, they face multiple challenges in terms of the credit, in terms of lower land holding size. Right. So keeping in this mind, the budget has given the sufficient funds and also implement various specific programs to increase the income of the farmers. Like if you see for the cotton farmers, they have implemented a very good scheme. Then for the fisheries sector, as well as agriculture infrastructure fund, which is playing very important role, and encouraging new young people to come to the agriculture through by bringing new technology in the agriculture sector. These are helping a lot. And furthermore, the fund which is also allocated to Ministry of Corporation, like in the previous budget, the government has initiated the Farmer Producer Organization, FPO. Now, one of the challenges for the small farmers is that they used to buy inputs from the retail and they used to also sell in the wholesale market. Now, with the FPO, with this collective bargaining, they can buy in bulk so that their input cost will reduce and they will able to bargain better and can sell their products in the domestic as well as the international market. And that's how, if you see that a lot of FPO and many of the farmers are now exporting their agriculture products. Right. Mr. Pradeep Goyal, his chairman, Asset Reconstruction Council of the ASSOCHAM, is also joining us on the program. Mr. Goyal, thank you very much for joining us on Sunset TV. Your first response to the union budget? कोई बात नहीं अशोक, आपके अखबार में मार्केट हैज चीयर्ड अप और मैं अभी यहाँ पे ऑनलाइन देख सकता हूँ द सेंसेक्स has surged almost more than 1,200 points और ये 60,745 पर कर रहा है. निफ्टी ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच 1800 मार्क्स. क्या हेडलाइन होगी आपकी? हेडलाइन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसका कारण बहुत साफ है. 2-3 जो अनाउंसमेंट हुए पीएम आवास योजना में 66% की इंक्रीज की गई है. वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को और स्पेशली इन द रूरल इंडिया
इसमें बोथ फॉर जॉब्स एज वेल एज फॉर कंपनीज गेटिंग बिजनेसेस इन दिस पीएम आवास योजना में बहुत बड़ा एक भारी होगा। दूसरी बात, रेलवेज आउटले, कैपेक्स आउटले इज वन ऑफ द हाईएस्ट एट 2.4 लाख करोड़। तीसरी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाय 33%। चौथी बात है जो कस्टम्स ड्यूटी जो है उसके रेट्स 33 से 13 ला गए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इससे सरकार ने ज़्यादा रेवेन्यू उसमें प्रपोज नहीं किया। मैं देख रहा था कस्टम्स रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं, पर उसमें लगता है कि रिफॉर्म का जो सुगंध मुझे मिल रहा है ये एक अच्छी खबर है। और फाइनल मैं जो कहूँगा कि जो इनकम टैक्स रिलीफ जो दिया गया है वो मैं समझता हूँ वो डिमांड के लिए काफ़ी लाभदायक लोगों की जेब में अशोक पैसे आएंगे, इस बार ज़्यादा आएंगे। और जो हमने देखा कि पिछले 2 वर्षों में जिस तरीके से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन शेयर मार्केट में बढ़ा है, और ये भी वजह है कि ग्लोबल सुस्ती और मंदी के बावजूद दुनिया के मार्केट्स जब नीचे जा रहे होते हैं, हमारे शेयर मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। और एक फाइनल बात, जो एक रवैया चल रहा था कि वो कैपिटल गेन्स टैक्स रिजीम में बदलाव लाएंगे, कुछ नहीं हुआ उसमें। तो इससे भी स्टॉक मार्केट को बहुत राहत मिली है, क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स रिजीम का जो चेंजेस अगर बजट में होता, वो चेंजेस ज़रूरी हैं, पर वो अगर एक एक्सपर्ट कमेटी के कंसल्टेशंस के बाद बजट के बाहर हो, वो मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत ही एक इंटेलिजेंट एंड प्रैग्मेटिक मूव रहा है। बिल्कुल। प्रोफेसर चरण सिंह, आपसे इसी को आगे बढ़ाते हुए ये जानना चाहेंगे कि अक्सर पहले हमें देखने में आता था कि न्यूज़ बेस्ड, हम किसी स्टॉक कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन न्यूज़ बेस्ड मार्केट फॉल हो जाता था। लेकिन अब कुछ खबरें आती भी हैं, लेकिन मार्केट में इतना रोबस्ट है, मार्केट इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं हमारे कि बहुत फर्क नहीं पड़ता। देखिए 1200 पॉइंट्स अभी मार्केट बढ़े हुए हैं। उसका एक कारण है। अब बजट में देखिए, आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, आपने कभी सोचा कि एग्रीकल्चर में एक्सेलरेटर प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को कहा जाएगा कि इस पे काम करो? मिलेट्स पे अभी नई रिसर्च शुरू होगी और कैसे उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, फिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, केमिकल्स फार्मिंग से हटाकर गोवर्धन की बात हो रही है। अगर इतने इनोवेटिव आइडियाज आएंगे जो हर तरीके से हर एक को हर प्रकार से जिसका फायदा होगा, स्टॉक मार्केट तो पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। तो पिछले 8 साल में मैंने एक चीज़ और देखी है, एक चीज़ सबके मन में स्पष्ट है, क्लियर है कि पॉजिटिव इम्पल्सेस सिस्टमैटिकली इकॉनमी में रिलीज किए जा रहे हैं। सिक्वेंशली ग्रोथ को आगे बढ़ाया जा रहा है, नी जर्क रिएक्शन नहीं हो रहे, करके भूल के वो नहीं हो रहा है। आप देखिए, शुरू की पहली बजट स्पीच के शुरू में वित्त मंत्री ने कह दिया कि जो हम पीछे करते हैं उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने के अलावा अब एक विचार सबके मन में बैठ गया। जब नए प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने $5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात की। कोविड हो गया, सब समझ गए, पर प्रधानमंत्री जी ने अपना स्तर और यार्डस्टिक इतना ऊंचा कर दिया है कि अगले 25 साल में हम कहाँ जाएंगे, उसके बारे में सब सोच रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ की बात हो रही है। इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर का लिमिट देखिए कैसे उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। इसके अलावा हमने कह दिया कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट 6.4 से 5.9 आ रहा है, पर आप ध्यान से देखिए उसमें करेक्शन कहाँ हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट कम हो रहा है जी। तो इसका साफ मतलब है कि जिस तरीके का बजट आ रहा है, उस जिस तरीके का फोकस है या जिस तरीके की नीति बन रही है, उससे सबका उत्साह बढ़ रहा है। ये तो बड़ा प्रोग्रेसिव बजट है और ये बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट लेके आएगा। And to make it more inclusive, Professor Sharma, what the finance minister has announced in the field of agriculture is some kind of agriculture fund, actually investment to the agri startups which are going to work now in rural areas, focusing more on the problems faced by farmers, providing them solutions. So how big a game changer is that going to be, including the young startup culture, infusing their energy into finding solutions of the farmers in rural areas? Culture. The government has encouraged that young people come, and also they bring the technology, they bring the innovation, and also to address the challenges which are faced by agriculture sector. Now for this new startup
are coming. If you see in the previous budget as well, this is the continued process that more and more people are coming to address the challenges. Like you have the drone system, smart agriculture, which is increasing the income. Then along with the farmer producer organization, then providing concessional credit, as well as implementing agriculture infrastructure fund. So all these are encouraging many people to come to agriculture and bring their innovative ideas and effectively implement, so Right. that the farm income, the actual person, the farmer's income should also be increased very fast. And these are the new startups. They are like drip irrigation, how much fertilizer needed for specific soil. All these are small things, but it's bringing a big change in agriculture. And that's why the Indian agriculture export has reached 50 billion US dollar. So this is an excellent things which is happening at the moment. Thank you. Okay, Mr. Pradeep Goel from Assam is connected with us now. Mr. Goel, thank you for your time. Your first response to the budget, sir. Do you find it inclusive? Because there's something for everyone in the in the budget this time. The middle class is happy. The agriculture sector has been given particular focus, and the government has tried to not bring in a lot of new things, but build on the reforms that it has been working on over the last couple of years. So, what are some of the key takeaways for you in this budget? Mr. Pradeep Goel, am I audible to you? Yeah, thank you very much for inviting me today and asking me over for. Yeah, yes, you are audible. Am I audible? Please Yes, confirm. yes. Yeah, please. Am I continue. audible? Carry on, Mr. Goel. Yes. Ma'am, am I audible? Loud and clear, Mr. Goel. Carry Hello, on. ma'am, am I audible? Ma'am, can you hear me? Wonderful. Yeah. Thank you for inviting me today. Thank you for inviting me today. Budget 2023 is to be looked upon not as a budget of 1 year. The budget is for the next 50 years. This budget is for everybody in the country. It's for public, it's for MSME, it's for professionals, whether it's from a service provider who is earning 10-15 lakh rupees, pensioners, whether it is for retired people or for government employees. So it's for everybody. So I think this budget is covering 100% of the countrymen, providing facilities for agriculture, credit schemes. So I think this is an exemplary budget, best ever in the last, I don't remember for how long, but it is the best ever budget, laying foundation for PM's dream of $5 trillion economy, which I think is going to go to 6, not only restricted 5, and laying foundation for a long-term India, not just a short-term India. And does it meet the expectations on the taxation front, Mr. Goel? This budget also covers the futuristic vision. Taxation front, I think the budget has been very caring for everybody. For example, as I already said, for pensioners, there has been benefits given to the pensioners. There is benefits given to the elderly, the benefits given to the individuals. I think, as I already said, there's everything for everybody in the budget, whether it is by way of taxes, by way of economic growth, by way of fruits, which will come out of this exemplary budget in the long term. Vision of green energy will also give the quality of life in the way of the living environment that we live in this world, on this planet, in the long term. I think, I would say it's a long-term budget for everybody in the country. Okay. Professor Singh, you just heard Mr. Goel describe it as a very, very futuristic budget. When we talk about it being futuristic, the finance minister did also mention how she and her government want to promote the artificial intelligence in India, and for which some amount of fund, 3 centers of excellence have been announced. What are the areas in which you see AI being used extensively in India, incorporating that in India's growth story? To me, when he said it is an all-round budget and everybody is benefiting, one thing, and he did mention about the industry and MSMEs, if you look at the credit guarantee scheme that's been extended, again, labor-oriented. Now, if you talk about the specific question of artificial intelligence and machine learning, immense scope, immense. It can happen in banking, it can happen in health,
it can happen in education, and the very fact that digital stamp is being so seriously used in the country and extensively the infrastructure is being laid out, artificial intelligence and machine learning will become the buzzword. Many times I feel India may not have to walk through the growth path, and it may leapfrog. Given the demographic dividend that we have, it may leapfrog. The effort said we have moved from the 10th position to the 5th position in a span of about 8 years. There is a possibility, if we are able to properly explore the digital world and combine the artificial intelligence and machine learning and bring it into banking, health and education, we could leapfrog much further. That's the advantage Japan had, technology, and this is exactly the advantage we are looking forward to. I think by her establishing, bringing it in focus, the artificial intelligence and asking the centers to work on it is going to help the country a lot. To my mind, it's also time, because we are holding the presidency of G20 now. It showcases to the world how fiscal policy can be prudently used for technological development and engaging the young population, engaging their fascination. I think that also is the role or the thought which she has in her mind while formulating this budget. अगर हम ये कहें कि ये बजट किसानों को, महिलाओं को और वेतन भोगियों को एक तरीके से समर्पित है, ख़ास तौर पे बाकी चीज़ों का भी पूरा ख्याल रखा गया है, और हम आपसे बात करेंगे ग्रीन ग्रोथ के भी बारे में। अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात की, ग्रीन ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। टूरिज्म को लेकर भी बहुत उत्साहित दिखी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी कोई हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं शायद? Yes, Mr. Pradeep Goyal from Assam is with us. प्रदीप गोयल जी, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ जी। आप इंडस्ट्री बॉडी से हैं, आप ये बताएं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर वित्त मंत्री ने कहा है, उस पे इंडस्ट्री की क्या प्रतिक्रिया है? क्या एक्सपेक्टेशंस थे और अब आप उस पे क्या त्वरित प्रतिक्रिया देंगे? बहुत ज़्यादा नहीं थे फॉर लोअरिंग ऑफ टैक्स रेट्स। ऑलरेडी हमारा टैक्स रेट इन इंडिया इज़ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव एज फार एज द इंडस्ट्री गोज़। हमारा टैक्स रिजीम इज़ कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत क्लियर है। सो हमेशा हम लोगों को एज इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स में डिडक्शंस, टैक्स एग्जम्पशन नहीं देखना होता। हमारे को देखना होता है हमारी आगे ग्रोथ क्या होगी, देश की इकॉनमी कहाँ बढ़ रही है, जिससे हमारा बिजनेस बढ़े। टैक्सेस हम देंगे, इससे देश की ग्रोथ में टैक्सेस काम आएंगे। इट इज़ अ सर्कुलेशन, जहाँ पे हमारा टैक्स हमारे ही काम आएगा देश की ग्रोथ में और हम ग्रो करेंगे। सो आई थिंक इट इज़ अ बैलेंस बजट फॉर एवरीबडी। एज यू राइटली सेड, टूरिज्म सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, आई थिंक इट इज़ फॉर एवरीबडी। इट्स अ अमेजिंग बजट, ऑसम, अमेजिंग। तो टीना, कुल मिलाकर लगभग हर तरफ से जो अभी प्रतिक्रियाएं कहीं से भी मिल रही हैं, बहुत ही अमेजिंग बजट लोग बता रहे हैं। एक तरफ जहां वेतन भोगी लोग खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान काफ़ी खुश हैं, वहीं बिजनेस करने वाले लोग खुश हैं। तो इसमें कहीं जो भी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं वो इसी तरह की आ रही हैं। You're right, Harjan. As you rightly said, a lot of focus has been on growth, green growth, and the finance minister has made a conscious effort to ensure that the development is not just inclusive and forward-looking, but sustainable in nature. And that's where the crux lies, because of the ambitious plans Professor Singh that India has laid out for itself. So in terms of energy transition, in terms of moving away from the fossil fuels, the kind of efforts that this government is making, and also the G20 theme is centered around the concept of growing sustainability. So how do you look at the efforts that have been made by the government towards sustainable growth? यूटी आ रही है, और इस टाइम पे G20 में प्रधानमंत्री जी ने वो लाइफ का भी कॉन्सेप्ट कहा है, जहाँ पे अब सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं। सर्कुलर इकॉनमी की भी बात की गई है, जहाँ गोवर्धन की बात हुई है। आप ग्रीन की बात कर रहे थे, तो इन्होंने खुद बजट में कहा है हम क्लीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जहाँ हॉर्टिकल्चर को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और एडवांटेज मिलेगा। तो जो सस्टेनेबल ग्रोथ पैटर्न जो प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में भी G20 के टाइम भी कहा था, और G20 की जब पीछे मीटिंग भी हुई थी दिल्ली में 2 हफ्ते पहले, उस पर काफ़ी एम्फसाइज दिया गया था। वो क्लियरली यही था कि हम लोग जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है और फॉसिल फ्यूल से
हटकर हम कहाँ पर आ रहे हैं। तो इंडिया ने जो ये प्रयास किए हैं सोलर पे, विंड पे, ये काफ़ी वर्षों से करते आ रहे हैं, आज ही का नहीं है। अब इन्होंने कहा कि 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं दे विल बी फेस्ड आउट, वो भी उसी प्रणाली में एक नया कदम है। तो मुझे लगता है जो सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल जो इंडिया का है, जहाँ हमारी ऑलरेडी कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम रहा है। 2 वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि मैं 2070 तक इसको बिल्कुल नेट ज़ीरो में ले आऊँगा, और जितना अभी प्रयास किया जा रहा है और बजट के थ्रू भी the announcements that are coming, they're very clear that and of course fumbled at the pollution point and said critical. Yes. Right? So we are heading for a pollution less country. And I think all the thinking is in that direction. And what is the kind of support, Mr. Bhattacharya, that we will be providing to the states now? Because the finance minister has made that announcement. But towards phasing out of the older vehicles, the finance minister did also promise some kind of support and incentive. There is a clear incentive will go out of its way. Tapping those vehicles. But coming back to your central question, how budget pushing the green agenda? There are 3 things that we must take note of. One is there is a clear outlay provision, the announcements are backed with numbers. Now, number 1 is that 35,000 crore outlay has been provided for energy transition. Yes. Now, this is clearly to achieve the net zero transmission goal, which was made in an international forum by the Prime Minister. Now, that's number 1. And number 2 is the alternative fertilizers as an idea has now been accepted as part of the circular economy. And if you look at the alternative fertilizers and their benefits, they also actually help you reduce your fertilizer subsidy. Now, if you look at the fertilizer subsidy number is actually showing a decline for next year. So clearly, the government is actually looking at it not just merely by way of announcing, but looking at it from the way those announcements can be backed up with numbers. And the third and the final point is 10 million farmers. 10 million farmers is not a small number, will be included for natural farming. So this is a big initiative. And that initiative will also help how the overall the emission level and whatever agriculture needs to get the support by way of environmental help will get it. So I think these are an integrated approach on the alternative environment-friendly initiatives have been announced in the budget. जी, और ये उदाहरण देखिए कि एक तरीके से जब हम ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो हाउ फार साइटेड द गवर्नमेंट इज। हम 2070 की बात कर रहे हैं, आज हम 2023 में हैं, 2070 की बात कर रहे हैं, आज से लगभग 50 साल 48 साल आगे की। और सरकार का ये मानना है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन वाले देश बन जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, खास करके ऐसे समय में टीना जब हम G20 की प्रेसिडेंसी भी कर रहे हैं। हमें पूरी दुनिया को एक संदेश भी देना है कि भारत किस तरीके से ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहा है, लेस कार्बन एमिशन पर काम कर रहा है। Certainly, and we have to ensure that words match with action also. So the Prime Minister makes the commitment and the country follows it up also. We'll continue the discussion on other aspects also, but in the meanwhile, Mr. P. Khambata, Group Chairman, Rasna Private Limited, is also joining us on Sunset TV. Mr. Khambata, delighted to have you with us on this special coverage of the Union Budget. Your first comments on the Union Budget, how forward-looking is it according to you? Thank you. Thank you. It's a great budget. It's a forward-looking budget for sure, because it's a budget of new ideas. And I think the whole emphasis on Amrit Kal means how India can now take the lead in really ensuring the Amrit Kal. Now, it is not only for the government to announce, it is also important that we all, people, citizens, industrialists, even the common men, academia, we all get involved. Now, let me give an example. The government has announced natural farming, organic farming. Now, can the government do it alone? You give 1 lakh crores, 2 lakh crores, what will happen if processing doesn't take place? So, industry has to now work with the farmer to ensure that the natural farming happens of the crops which we can process. And if we can process, we can get 5 times the value of the crops. And so that way, the whole economy can get benefited, and the farmer mostly can get benefited, industrially can get benefited, and consumer will get good organic products at a good price, so that we eat chemical-free food. So I think it is a good thing for everybody. Similarly, if you ask me, a lot of exemptions have been given to middle-class people. Now, in my mind, that will also help industry, because consumption-led growth.
growth is there. And the benefits of infrastructure coming into rural areas will also benefit everybody. So I believe it's a good positive budget. Something is for everybody. It's a futuristic budget and definitely a budget where I think when India takes the presidency of G20, we will tell the world that ultimately how India is taking it. Let us take an example of fiscal deficit. Even the developed countries in the world are not keeping any tab on their deficits. They are all going haywire. Now at that time, India has actually done a very good job of keeping the fiscal deficit under control. In fact, our Reserve Bank and our government has been praised by even international experts for that. And today the FM announced that she plans to further reduce the fiscal deficit. I think it is a very, very good news. It's a very, what I call responsible statement. And I am very happy that our FM is making that statement and she is able to keep the fiscal deficit in control, I would say. बिल्कुल, और आपने बहुत सही अभी ये पॉइंट आउट किया कि किस तरीके से हमारी सरकार जो है और रिजर्व बैंक इंडिया है आपस में मिलकर एक बहुत ही बैलेंस तरीके से आगे बढ़ रही है। और इसका हमने सबसे बड़ा उदाहरण देखा था तब जबकि रेट हाइक हो रहे थे और ग्रोथ को बिना अफेक्ट किए हुए बहुत बड़े ही धीरज के साथ आरबीआई ने काम किया। और आज हम देख रहे हैं कि हम महंगाई को भी काबू करने में सफल रहे हैं और हमारा ग्रोथ भी अफेक्टेड नहीं हुआ। और इसी तरीके से जो आप फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट को भी हम मैनेज करने में काफ़ी कामयाब होते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं वही कहने की ट्राई कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको बैलेंस बजट बना रहा हूँ। और चरण सिंह जी, आपके पास आते हैं। आपने कई संस्थानों में काम किए हैं और समावेशी विकास की बात में कभी मुझे याद है आपसे बात हो रही थी कि कोई बहुत गरीब आदमी था और वो बैंक में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाता था, खाता खोलना तो बहुत दूर की बात है। आज जो वित्त मंत्री ने एक घोषणा की है उसको ख़ास तौर पर मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। जब वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रही थी, समावेशी विकास के लिए वंचितों को वरीयता दी जाएगी। दे विल गेट द प्रायोरिटी। जो पीछे के तबके के लोग हैं, जो वो लोग हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं। और इसका उन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए, जेल में जो कैदी हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं कि वो बॉन्ड भर सकें, पैसे दे सकें, सरकार ने उनके लिए भी योजनाएं लाई हैं और उनको सरकार पैसे देगी। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं उस टाइम पे रिजर्व बैंक में नौकरी कर रहा था, 2006 की बात है। उस टाइम पे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात इतनी चलती नहीं थी, हम लोग शुरू कर रहे। तो मैं वहाँ जाके सर्वे कर रहा था। बैंक ब्रांच के बाहर जो मोची बैठा है उसकी हिम्मत नहीं है, वो बैंक मुलाजमों के जूते रिपेयर कर रहा है और उसकी हिम्मत नहीं है कि अंदर जा सके, इतना डर है। तो उस डर से जब मिशन मोड में जनधन योजना को शुरू किया गया, और अब तो आज भी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, वित्त मंत्री जी ने, कि करीब 47 करोड़ लोग उस जनधन योजना और जैम ट्रिनिटी में आ गए। तो उससे हम लोग ने फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी अटेन कर लिया है। जिस तरीके की सरकार की नीति भी है, अभी भी जिस तरीके उन्होंने खुद कहा कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से भी और आरबीआई के एक्ट को भी, और मुझे लगता है एनबीएफसीज को भी उन्होंने मॉडिफाई करके या रिविजिट करके देखना है किस तरीके जनधन तक हम लोग अच्छी तरीके से पहुंच पाए। पर ये बात जो अभी अभी इन्होंने कही वो बहुत अच्छी बात कही, जो फिस्कल स्पेस की बात की। दुनिया भर में डेट टू जीडीपी रेशियो 100 से ऊपर जा चुकी है, जबकि एक तौर पे आधारित माना जाता है कि 60% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। में 250% 250 से 250 तक जा चुकी है। हमें हमारे देश को लोग आके समझाते थे कि आपको फिस्कल पॉलिसी करनी नहीं आती है। आज देखिए, इतना दुनिया बदल गई कि हम लिमिट के अंदर हैं और ये लोग लिमिट से बाहर हैं। उसका कारण ये था कि कोविड के दौरान जिस तरीके हमारे यहाँ नीति बनाई गई, बिल्कुल लेज़र बीम करके सबको पैसा दिया गया, उसके पूरी इकॉनमी को संभाल लिया गया। लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं की गई, जहाँ आप रिजर्व बैंक का नाम ले रहे थे, लिक्विडिटी भी मैनेज अच्छी तरीके की, उससे कीमतें बहुत कम बढ़ी। मैं भी कहता हूँ 6% के करीब हैं, पर विदेशों में कीमतें तो 5 टाइम्स हैं एवरेज से। जहाँ 2% का नॉर्मल एवरेज 30 साल का है, वहाँ पर वो 10% तक पहुँच गए। हमारा 30 साल का एवरेज 6% है, हम लोग 6, 7, 8 के बीच में रहे हैं। तो ये जो नीतियाँ बनी, उससे फिस्कल स्पेस में भी हमने मेंटेन किया। उसी कारण डेट टू जीडीपी रेशियो कंट्रोल में रही, उसी कारण कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता गया, उसी कारण इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रही।
ये G20 की प्रेसिडेंसी में मुझे लगता है हमें ये मौका मिला और ये बजट उसका प्रमाण है दुनिया को दिखाने का कि अगर आप पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनाते हैं, अकाउंटेबिलिटी से बनाते हैं, बेशक आपके पास पैसा नहीं है, आप उतनी ही फोर्स से रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। उसी की नौबत आज ये हुआ कि हम लोगों ने जहाँ करेक्शन किया यहाँ पर 6.4 टू 5.9 0.5% से आप रेवेन्यू डेफिसिट में करेक्शन देखिए मच मोर 2.9 से 1.4 है। तो मेजर करेक्शन रेवेन्यू डेफिसिट में हो रहा है। उसका कारण ही ये है अच्छी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जो बन रही है। एक चीज़ और है उसमें, जिस प्रकार आज भी इन्होंने लेफर कर्व को यूज़ किया है और टैक्स स्लैब्स को कम किया है और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ईज कर दिया है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जो ईज भी होती है वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पे भी होता है, कितनी जल्दी टैक्स अथॉरिटीज़ पहुँच के असेस कर सकती हैं। तो वो दोनों चीज़ें होती है। तो वो दोनों चीज़ों डिजिटल वर्ल्ड के कारण, आईटी के कारण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Okay, के Professor, कारण we'll have to stop पहुंच at रहे that. We'll have to proceed to telecast the live proceedings of the Rajya Sabha. So over to Rajya Sabha. She has you just want to ignore. Now you come to me and also ignore. And she said, I see okay, but standard quality also suggest or better than that, what it suggests is when one of the groups you have to square ones. You know what? So basically, they can spend the charges in my side because you have that lockdown. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Dr. Ram Kripal Sinha on 15 January 2023. Born on 3rd January 1936, Dr. Sinha served as a member of this August House from 1974 to 1980 and the Union Council of Ministers from 1977 to 79. His contributions as Cabinet Minister of Government of Bihar and as a professor of English in various colleges across states of West Bengal and Bihar are commendable. In the passing away of Dr. Sinha, the country has lost an outstanding academician, committed parliamentarian, and an able administrator. We deeply mourn his untimely demise. I request the honorable members to rise in their places to observe silence as a mark of respect to the departed noble soul. Then it will be sent over, right? Because apart from love, that messages to I see you, and there used to be a community policy. That's very bad. Trust me, I'll show you the tape how it is so bad. I will
Secretary General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy. The Union Budget 2023-24, Shrimati Nirmala Sitharaman. Thank you, sir. I rise to lay on the table a statement of the estimated receipts and expenditure of the government for the year 2023. Fiscal Policy Statements 2023-24, Shrimati Nirmala Sitharaman. So with your permission, I rise to lay on the table a copy each in English and Hindi of the following papers under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. 1. Medium-term fiscal policy fiscal policy strategy statement, and 2. Macroeconomic framework statement. I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee in its meeting held on 31st of January 2023 has allotted time for the government business as follows. Discussion on the motion of thanks on the Honorable President's address, 12 hours. General discussion on the Union Budget for 2023-24, 12 hours. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 2nd February 2023. It's minus 1. Polypro, yes. Yes, I told the other basic class, I'm just giving you a rough figure to match what I understand. Then buy this first. Then they will want polypro. For that, minus 4. 38 minus 4. That depends on their height and the X is standard. What minus is because 30, I only feel it's for the original price, because I was not And वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टीना आज बजट पेश किया 2023-24 के लिए, और इसमें जो आम जनता के लिए, जो वेतन भोगियों के लिए ख़ास बात थी, हम एक बार फिर उसको रिपीट करना चाहेंगे। आम जनता को पिछले 8 साल से जिसका इंतज़ार था, दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वो उम्मीद पूरी कर दी है। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था का ऐलान किया है। नए टैक्स सिस्टम में आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है ताकि हम सबको सुविधा हो। अब 7 लाख की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब तक ये सीमा 5 लाख रुपए थी। नए टैक्स सिस्टम के मुताबिक 3 से 6 लाख तक की कमाई पर
5% टैक्स देना होगा, जबकि 6 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक की अगर कमाई है तो आप 10% वाले ब्रैकेट में हैं। अगर आपकी कमाई 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक है तो आपको 15% टैक्स देना होगा। 12 से 15 लाख की आय पर 15% टैक्स और 15 लाख से ज़्यादा की आय पर सीधा 30% टैक्स लगेगा। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी प्रोफेसर चरण सिंह हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम थोड़ी सी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जो बात कर रहे थे कि डेट टू जीडीपी रेशियो, इस पे भी भारत में बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ है, एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो थोड़ा आप समझाने की भी कोशिश करें कि आर्थिक विकास के रास्ते में टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो होता है अभी 55-57% के आसपास होगी, कितनी होनी चाहिए और इस टूल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि देश हमारा आर्थिक विकास की प्रगति पर कितना और कैसे अग्रसर है। फिस्कल पॉलिसी में, वित्तीय नीति में ये डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत अहम जगह रखती है। डेट टू जीडीपी रेशियो का आप सिंपल तरीके से समझें, आप जितना ऋण ले रहे हैं हर प्रतिवर्ष आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, जो वित्त मंत्री जी ने कहा है 6.4 से 5.9 हो जाएगा, तो जो वित्तीय घाटा है उससे आपको ऋण लेना पड़ता है। जब आप ऋण लेते हैं तो पिछले कई सालों का ऋण जुड़कर एक बहुत बड़ा ऋण बन जाता है। तो उस ऋण के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो तो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, और जो जितना भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, हम अपने देश में 17% टैक्स टू जीडीपी रेशियो लेके चलते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारे देश में बाकी देशों के निस्बत बहुत कम है। कई देशों में 40% से ऊपर है, ज़्यादातर 30 से 35% होता है। हम 17% पे बड़ा प्रयत्न करने के बावजूद ये ऊपर नहीं जा रहा है। इस साल थोड़ा इम्प्रूवमेंट थोड़ा अभी मेरा ख्याल है थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि लेफर कर्व यूज हुआ है, तो मुझे पूरा विश्वास है थोड़ा उछाल इसमें आएगा। पर पिछले 10 वर्षों से 17% चल रहा है। अब इतने जब विकासशील देश है, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, इतना ग्रो करना है, तो पूरा आउटले होता है। तो आउटले के लिए आप फिर ऋण लेना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर ऋण हमारे देश में यूज़ होता रहा है सैलरीज, वेजेस, इन चीज़ों में, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, पेंशन्स, इसमें यूज़ होता रहा है। कुछ 3-4 वर्षों से वित्त मंत्री जी ने क्या कहा कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा जोर डालेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट को रिस्ट्रिक्ट करते जाएंगे। जितना ज़्यादा ऋण आप लेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा। पर अगर आप फाइन ट्यून करेंगे ऋण को इस तरीके कि उसकी मैच्योरिटी थोड़ी कम कर लेंगे, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, इंटरेस्ट बर्डन बजट पे थोड़ा कम हो जाएगा, पर उससे रोल ओवर रिस्क बढ़ जाता है। हम लोगों ने हमारे देश में बहुत अच्छे तरीके से, कुशलता से, जो ऋण टू जीडीपी रेशियो है, जो दुनिया का स्तर है, स्टैंडर्ड है, मैस्ट्रिच ट्रीटी में 60% होना चाहिए, हम लोग उससे नीचे चल रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हमारे यहाँ पर भी फाइनेंस कमीशन ने स्टडी की। 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि सेंटर का 60 के करीब होना चाहिए, ओवरऑल हम लोग 85 के करीब होने चाहिए। स्टेट्स को अगर मिला लें, स्टेट्स को मिला लें तो 85, और सिर्फ सेंटर की बात करें तो जो स्टैंडर्ड है 60, हम उससे नीचे 60% होना चाहिए। लेकिन इसमें यहाँ एक पूछना चाहूंगा कि ये जिस तरीके से मैनेज किया गया है, इसमें फिर वो रोल ओवर वाली बात आ जाती है। तो यही कुशलता है, जिस तरीके जो बकेट्स हैं, अलग अलग मैच्योरिटी प्रोफाइल को बैलेंस करके सरकार ने आगे ऋण किया है। अब दुनिया भर में कोविड के बाद, 2008 लेमन ब्रदर्स के बाद तो बहुत बढ़ गया था, पर कोविड के बाद दुनिया भर में ये स्तर, वही जो बहुत विकसित देश हैं, जो हमें सिखाते थे और कहते थे, उन सब का अभी डेट टू जीडीपी रेशियो 100 से ऊपर जा रहा है, कईयों का 200 से ऊपर है जी। तो ये मुझे लगता है कि G20 की प्रेसिडेंसी में सरकार को, दुनिया को ये बताना चाहिए कि हमने कितने प्रयत्न किए और किस कुशलता से ऋण भी लिया। टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है, उसके बावजूद ऋण लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, पर हमने डेट टू जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ने दी। उसमें हमने बकेट्स, किस मैच्योरिटी बकेट, किस प्रोफाइल है, उसको किस तरीके कुशलता से यूज़ किया, वो बहुत सराहने वाली बात है। और यही कुशलता हमें बताती है कि पूरी दुनिया आज कह रही है टीना कि भारत जो है वो
आर्थिक फ्रंट पर, अर्थ जगत के फ्रंट पर एक ब्राइट स्पॉट है। और यही वजह है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट्स भी लगातार आ रहे हैं और दुनिया के बाकी देश, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन सहित, जापान सहित बाकी देश जहाँ थोड़ी सुस्ती और मंदी की चपेट में आ रहे हैं या आ चुके हैं, वहाँ भारत अभी भी बुलंदी के साथ अपना बजट पेश कर रहा है और एक तरीके से कहें सबको कुछ न कुछ, सबकी किटी में कुछ न कुछ डाल रहा है। You're right, Harsh. And since you spoke about Kushalta, let me frame my next question accordingly to Professor Sharma. The fact that, you know, a lot of thrust of this government has been on skilling and upskilling the youth. The youth today are our biggest strength, and they are the ones who are going to define India's growth in the times to come. So to, you know, encash on their talent, on the demographic dividend advantage that we have only for a limited period, of course. So we have to keep that in mind, and we have to ensure that the skilling and upskilling is a process. Towards that, the Kaushal Vikas Yojana, I believe the fourth such program has been announced. Now, if I could understand further from you on the importance of this program, how successful have the previous versions been so far ever since the Kaushal Vikas Yojana program has been announced by the government? The important thing is that if we really wanted to do the economic development, we need skilled workers. Clearly. And skilled workers, and for this the education and the expenditure on the education institute, the center of excellence, then as well as now in the budget, there are many schemes have been initiated by the government for skill development. Even not only for the workers, but also for even the government employees, the capacity building programs schemes also has been initiated in this scheme. So if we really wanted to capitalize on the demographic dividend, so this is the better way to match the skill to the industrial expectations. So because this youth will go to the industry, and if this is match, the skill is matched, then it would be their employability as well as contribution to the economy will also increase substantially. Absolutely. So this is the... We'll continue to, you know, decode the various announcements, the various aspects that the finance minister has laid stress upon in the union budget for 23-24, also laying the roadmap for the future, in fact, not just this decade, but for the next 25 years. We are joined by Mr. Vineet Mittal. He's Group Chairman of the Avada Group. Mr. Mittal, thank you very much for your time. Your first response to the budget, sir, and does it meet the expectations, the pre-budget expectations of the industry? So if you look at, I come from green industry, and it was very encouraging and delightful to see the India's government's continuous focus on greening the planet and focusing on decarbonization. So in terms of our own expectation at an industry, we were focusing more on what government is going to do on green growth, decarbonizing the economy, infrastructure spend. On all of that, government has done amazingly well. 33% increase in capex when the rest of the world is talking about recession and deflation, and India is continuing to focus on growth, is a very encouraging step. And the way they have designed the budget this time, even the states are incentivized to draw down at 0% based on capex. So if you look at, that's going to be a very encouraging step. The focus on education and youth. So India is all about Indian talent, and focusing on them to continuously unleash their abundance by retraining them, by upskilling them, so that industry doesn't have to skill them for 6 months to a year and you can get the ready resources, is a very welcome step. What they have done, in my view, is aligned their G20 vision and priority of green growth, decarbonizing the economy in the budget as well, and it will give a very strong message to the rest of the world. See, there are very few spots in the world where world can invest and benefit. आज इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि भारत सरकार जब खुद 13 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगी, आज सभी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, बैंकों की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, और जस्ट ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में 125 बिलियन का इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 7 साल में होगा.
सोलर, विंड, पम्प्ड हाइड्रो में अनदर 375 बिलियन का, तो $500 ट्रिलियन तो सिंगल सेक्टर ऑफ एनर्जी के अंदर होगा। तो अगर इतना इन्वेस्टमेंट होना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ रही है, तो देश विदेश के इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है। सो गवर्नमेंट ना केवल अपने मैसेजिंग में बट अपनी पॉलिसीज में बिल्कुल कंसिस्टेंट है, और फिस्कल डिसिप्लिन भी जो दिखाई है, इससे ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ग्लोबल पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अपना भविष्य बहुत अच्छा है। 5 ट्रिलियन नहीं बल्कि 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2030-2031 तक। Absolutely, you're right, Mr. Mittal, and that is the kind of optimism that has been reflecting. We have guests with us in the studio who've been talking about the sunshine sectors as well for India. But since you mentioned about green being the future, in fact, it's already the present and it being clearly the future. You spoke about how it's important to align the educational needs with what the industry wants also. How do we take it forward? That's a prominent announcement made by the finance minister that the education should be in a way which aligns with what the industry wants. So how do we take it forward in the times to come? So if you look at what we do as an organization, we are reaching out to NITs, IITs, technical institutes, or even ITI for that matter, and saying what we would need as an industry. And to my surprise and pleasant surprise, last year around 8 to 10 ITI agreed to actually train the engineer on our curriculum, so that we can employ more than 2,000-3,000 people in our upcoming manufacturing project of cell to module manufacturing. And we were really worried and scared that how will we get so many manpower at such a short notice. And institutes were willing, and they want to work in partnership with the industry, but industry has to go and talk to each and every institute individually right now. And I think with the government's focus and education department's focus on aligning their curriculum with the industrial need and future of the industry is a welcome step. Absolutely, the right kind of collaboration among all stakeholders who can take this idea forward. As well as with the help of government, because future is of India, whether it is manufacturing sector or absolutely. Thank you, Mr. Mittal, for joining us on the program with your perspective. Meanwhile, let's go across to the Parliament complex, where my colleague Suraj Mohan Jha is joined by a group of parliamentarians. Suraj, over to you. यहाँ पर हमारे साथ 3 सांसद अभी मौजूद हैं राज्यसभा के। अभी राज्यसभा में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को सदन के पटल पर रखा है, और इस बार का बजट ऐसा कहा जा रहा है कि कृषि, मध्यम वर्ग, महिलाओं के लिहाज से, युवाओं के लिहाज से काफ़ी सकारात्मक है। तो आइए हम सांसदों से बात करते हैं। हमारे साथ हैं विजय पाल सिंह तोमर जी। आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं, किसान नेता के तौर पर आपकी छवि रही है। सर, अगर मैं किसानों के लिहाज से कहूँ तो किस तरह का बजट है? ये बजट देखिए, देश भी कृषि प्रधान देश है, और जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, लगातार किसानों के लिए वरीयता पर रखा गया है, उनकी सहूलियतें दी जा रही हैं। और इस बजट में भी कृषि के ऋण का मामला है, उसको बढ़ाने का काम किया गया है, और चिंता की गई है, किसानों की भी चिंता की गई है, आम आदमी की चिंता की गई है, गरीब लोगों की चिंता की गई है। प्रधानमंत्री आवास में बढ़ाने का काम किया गया है। तो कुल मिला के बजट साधारण निचले तबके के, मिडिल क्लास के लिए और किसानों के लिए, गांव के लिए बहुत अच्छा बजट है। विजय पाल सिंह तोमर जी कह रहे हैं कि किसानों के लिए, वंचित वर्ग के लिए बजट काफ़ी अच्छा है। हमारे साथ बस साहब हैं। बस साहब, मैं अगर रक्षा विभाग के लिहाज से बात करूं तो किस तरह इस बजट को देखते हैं? मैं कहता हूं एक्सीलेंट बजट है। कैपिटल आउटले को बढ़ा दिया गया है। देश की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो मैं विजय पाल जी से रजामंद हूँगा कि अगर किसान के लिए बजट अच्छा है तो जवान के लिए और भी बेहतरीन बजट है। कैपिटल आउटले मल्टीपल टाइम्स बढ़ने की वजह से हथियारों का मैन्युफैक्चर, हथियारों की खरीद और हमारी पे एंड अलाउंसेस, जो कि 1 रैंक 1 पे तो लागू भी हो चुका है और मिल भी चुका है। तो ओवरऑल डिफेंस के लिए, देश के लिए, और सैलरीड ग्रुप यानी 7 लाख तक की सैलरी अब टैक्स फ्री है। ये एक जुबिलिएशन का मैटर है
कि सैलरीड ग्रुप के लिए ये एक्सीलेंट बजट है। बिल्कुल, सैलरी क्लास के लिए ये अच्छा बजट है। जुगल किशोर सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं, आप गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं। सर, अगर मैं कारोबारियों के लिहाज से बात करूं तो काफ़ी रियायतें दी गई हैं, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी रियायतें दी गई। आपने देखा होगा कि एमएसएमई के अंदर 9,000 करोड़ का उन्होंने आवंटन किया है। मतलब कि आप देखें, बूस्टिंग करेगी, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है वो बूस्टिंग करेगी। और आप देखेंगे आने वाले साल के अंदर हमारा भारत का ग्रोथ जीडीपी जो ग्रोथ है वो बढ़ के आगे जाने वाला है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि बच्चों को और युवाओं को साथ में उन्होंने जोड़ा है। वो किस तरह जोड़ा है कि डिजिटल के माध्यम से वो लाइब्रेरी वगैरह बनाने का, और बच्चे वहाँ से वो ज्ञान वगैरह वो लेंगे। तो उस तरह का जो माननीय निर्मला सीताराम जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है, तो आने वाले वक्त में हमारा जो भारत बूस्टिंग करेगा वो अनबिलीवेबल होगा। और हमारे काफ़ी सारे कारोबार के अंदर उन्होंने रियायतें दी है। जैसे हमारे जनरल साहब ने बताया कि 7 लाख तक की, तो जो आम लोग जो थे 5 लाख तक जो पहले टैक्स पे करते थे, आज 7 लाख के दायरे के अंदर, मतलब भी मान लीजिए 50,000 60,000 की उसकी सैलरी हुई तो वो खुद टैक्स पे नहीं करना है, तो वो आराम से ज़िंदगी जी सकेगा, उसका बजट बना पाएगा। तो बहुत फुल गुलाबी बजट दिया है। मैं निर्मला जी का आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो हमारे साथ अभी 3 सांसद मौजूद हैं। अभी हमारे साथ जम्मू से जुगल किशोर शर्मा जी भी मौजूद हैं, लोकसभा के सांसद। उनसे भी जानते हैं जम्मू कश्मीर के लिहाज से यह बजट किस तरह का रहा है। सर, अगर बजट अगर आपसे जानना चाहें इस बार। जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश भर के नागरिकों में एक खुशी की लहर है कि बहुत ही अच्छा बजट जो है वो नरेंद्र भाई मोदी, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने पेश किया है। आपने देखा होगा कि छोटे से छोटे वर्ग के लिए भी और बड़े वर्ग के लिए भी सारी सुविधाएं उन्होंने दी हैं। और विशेष तौर पर आम नागरिक जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है और मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठे करता है, उस पर जो टैक्स का बोझ पड़ा रहता है ना, उससे उनको आज निजात मिली है। इसलिए मेरी यही वित्त मंत्री सीतारमण जी को मुबारकबाद है। और विशेष तौर पर लोगों की तरफ से अभी मैं देख रहा था कि मुझे कई फ़ोन आ रहे थे कि इस बार का बजट जो है बहुत ही बढ़िया बजट जो है वो पेश हुआ है। तो अभी हमने राज्यसभा के 3 सांसद और लोकसभा के 1 सांसद हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि इस बार का जो बजट है वो किसानों के लिए, जवानों के लिए, कारोबारियों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए काफी कुछ अच्छा रहा है। सूरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। So Harsh, reactions continue to come in from the Parliament House complex. The parliamentarians hailing it as Umeedon ka budget, a welfare budget in fact. What's interesting is it's one of the shortest by Nirmala Sitharaman, within 90 minutes, but very very high on substance. देखिए, जो छोटी कई बार चीजें होती हैं वो बहुत ही अहमियत वाली होती हैं, और मुझे लग रहा है कि इस बजट में ढूंढना पड़ेगा कि विपक्ष भी क्या कहे, कहाँ शिकायत का मौका है। Let's also hear from Mr. S.C. Agarwal and Mr. V.K. Singh. They've spoken to my colleague Mohammad Fateh Tipu and Akhilesh Suman. So let's hear what their reaction to the budget is. अमृतकाल का पहला ये आम बजट है, कैसे देखते हैं आप वो ये बजट? इसमें हर कुछ है, जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स की लिमिट्स बढ़ा दी है। HNI का जो 42% टैक्स था वो 39% समथिंग मैक्सिमम टैक्स रहा है, वहाँ एक रिलीफ दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का 10 लाख करोड़ से ऊपर एलोकेशन किया है, जो कि लास्ट ईयर 7.5 लाख करोड़ था। इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा इकोनॉमी ग्रो करने के अंदर। सर, पीएम मोदी का एक बयान आया था कल, उन्होंने कहा था कि ये आम बजट देश के लिहाज से तो बेहतर होगा ही होगा, साथ में दुनिया के लिहाज से भी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उस लिहाज से भी ये बजट बेहतर होगा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश के हिसाब से तो बेटर है ही और इंटरनेशनली भी बेटर है, क्योंकि हम PLI स्कीम के अंदर इंडस्ट्री को इनवाइट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जो 15% कंसेशनल कॉर्पोरेट को टैक्स दिया था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, वो एक्सटेंड कर दिया है। तो इससे क्या फ़ायदा है कि जो बाहर जो चाइना का एक तरीके से चाइना +1 वाला जो ब्लॉकेज था, तो उससे बाहर की इंडस्ट्री इंडिया में आना चाहती है, तो उनके लिए सुविधा है। बजट कैपेक्स रिलेटेड है, अच्छा बजट है। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना देश सुधरेगा, अच्छा बनेगा, अच्छी सहूलियत आएंगी। और इसी तरीके से एविएशन के अंदर भी एक टारगेट है। अब तक हमारे पास 100
एयरपोर्ट, एयर स्ट्रिप्स, वाटर एयरड्रॉम्स, हेली, इनका टारगेट था, अब 50 और का हो गया। तो इनके ऊपर जब पैसा लगेगा तो पैसा अलग अलग इंडस्ट्रीज में चला जाता है, अलग अलग चीज़ों में जाता है, सबको फ़ायदा होता है, उससे इकॉनमी को बूस्ट मिलता है। जितना पैसा चलायमान होगा उतना इकॉनमी अच्छी चलेगी। लेकिन सर, आप फॉर्मर डिफेंस पर्सनल भी रहे हैं, आप विदेश राज्य मंत्री भी रहे हैं, आप कहें कि अगर डिफेंस के हिसाब से इस बजट को देखें तो कैसा रहेगा? देखिए, डिफेंस के अंदर पूरा ध्यान आत्मनिर्भरता के ऊपर है और इस बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आत्मनिर्भरता और सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस जो क्रिएट हो रहे वो सब मदद करेंगे। तो क्या इसमें डिफेंस प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की जो बात है वो एक्सपोर्ट का अगर हम बनाएंगे अपने यहाँ तो एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो हमारे यहाँ जो चीज़ें बन रही हैं और जो विश्व स्तरीय हैं वो एक्सपोर्ट भी होंगी। आपको एक्सपेक्टेशन जैसा था वैसा ही ये बजट है या उससे कुछ ज़्यादा है या कम? मेरा एक्सपेक्टेशन था कि प्रोग्रेसिव बजट होगा वैसे। तो अगले 1 साल का बजट है या 25 साल का? ये 25 साल की नींव है। रिकॉर्डिंग कर देना उसमें। तो ये 25 साल की नींव है, बजट भले ही 1 साल का हो। ये कहना है रिटायर्ड जनरल वीके सिंह का, जो वरिष्ठ डिफेंस पर्सनल भी रहे हैं और राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय हैं। संसद टेलीविजन के लिए अखिलेश सुमन। जी बिल्कुल, ये दरअसल भारत जब 100 साल का होगा, आज़ाद भारत 2047, अमृतकाल का पहला बजट, अगले 25 साल का रोडवे है और उसकी पहली सीढ़ी है ये बजट। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य चमड़िया जी, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड में, आपका स्वागत है। आज का बजट आपने देखा, टूरिज्म सेक्टर के लिहाज से अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बजट को आप कैसे देखते हैं और टूरिज्म का कितना विकास हो पाएगा, आप बताएं। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने टूरिज्म पे इस बार खासा फोकस किया है, जो कि एक अच्छी बात है, रोपवे इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी बात है। और यहाँ पर 50 डेस्टिनेशन वो आइडेंटिफाई करेंगे और जहाँ पर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो होपफुली वहाँ पर रोपवे इंडस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। एंड ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है जैसे सिटी को डीकंजेस्ट करने में। वहाँ पर भी रोपवे के कई प्रपोजल्स आए हैं एंड उन्होंने जो 18% GST था उसको 5% किया है एंड रोपवे को काफ़ी बड़ा बढ़ावा ऑलरेडी दे रखा है। जी, इसमें आपने कहा कि रोपवे को काफ़ी बढ़ावा दे रखा है। अभी भी हमारे देश में अगर टूरिज्म की बात करें, पिछले कुछ वर्षों में 7-8 वर्षों में काफ़ी कुछ विकास हुआ है, कुछ ऐसे नए एरियाज भी आए हैं जो टूरिज्म के लिहाज से काफ़ी पनपे हैं। लेकिन अभी भी क्या आपको नहीं लगता कि रोपवे जो है हमारा टूरिज्म में जितना इस्तेमाल होना चाहिए अभी उसमें कमी है? एकदम बहुत काफ़ी कमी है। आज हमारा जितना विशाल देश है उसके हिसाब से हमारे यहाँ रोपवे बहुत कम है। एंड एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट अहम स्टेप जो गवर्नमेंट ने लास्ट 2 साल में लिया है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, जो कि काफ़ी साल लग जाते थे इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने में, रोपवे के लिए उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। रोपवे को उन्होंने इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उन्होंने डिक्लेयर किया है एंड इससे काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा रोपवे को। और आगे जो 5-10 साल में आप काफ़ी सारे रोपवे आप देख पाएंगे इंडिया में। बिल्कुल ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चमड़िया जी। और बजट पर संसद टीवी में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा रात तक जारी रहेगी, देर शाम तक। और आप देखते हैं, Harsh, before we wind up this program, Mr. Rajan Navani, VC and MD JetLife Group of Companies, also joins us from the CI. Very quickly, let's also get his response on the Union Budget 23-24. Mr. Navani, thank you for your time. Your quick response to the Union Budget and what stands out for you in this budget, which is being hailed as a very, very forward-looking one by the government. Yeah, I think, this is definitely a very progressive budget. It is built in our Amrit Mahotsav in the 75th year of Indian independence, and very clearly the 7 priority areas, identified by Honorable Finance Minister, be it inclusive development,
green energy, youth are all ones that are going to, lead India to a position of global leadership by India at 100. So truly a path-breaking budget in that sense, built on a very strong foundation. And I think what has really worked well is the advancement of many of the initiatives that the government has already focused on in the past. So we've got a very strong digital public infrastructure on finance and health, taking that to agriculture, creating a pool of funds to be able to spur innovation in agriculture, which is really tier 2, tier 3 rural youth getting engaged with digital, with entrepreneurship, with innovation, reducing taxes in the hands of the common man so that you can spur spending and growth. I think all will work together to create a very virtuous cycle that I believe is going to be directionally in the right way for the future of the country. So overall, I do definitely feel that it's a very strong, good, forward-looking budget which has been announced today by the Honorable Finance Minister. बिल्कुल बजट के बाद जो तमाम सेक्टर्स को उम्मीदें थी, क्या उन उम्मीदों पर बजट खरा उतरा है? लगातार संसद टीवी पर आप बजट से जुड़ा जो तमाम बारीक विश्लेषण है वो हमारे साथ देख रहे हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल दहिया भी इस समय जुड़े हुए हैं और जाहिर तौर पर माना यही जा रहा था कि जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात होती है उसमें चमकती अर्थव्यवस्था के तौर पर कहीं ना कहीं उम्मीद भरी नजरों से भारतीय अर्थव्यवस्था को देखा जा रहा है। ऐसे में इस बार के बजट पर न सिर्फ देश की निगाहें थी बल्कि ये माना जा रहा है कि दुनिया भर की निगाहें इस बजट पर लगी हुई थी। तो अब वित्त मंत्री के पिटारे से जो घोषणाएं निकली हैं उससे कितना बड़ा बूस्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा, इस पर लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। Well, yes, Preeti, thank you so much. So, as you've been witness to this year's union budget, which was presented by the Finance Minister, starting 11 a.m. In the lower house today, and of course reactions coming in, details coming in right now. We're keeping you updated on what exactly the budget has in store for various sectors and specifically for the common citizen of the country as well. So we'll keep on bringing you all the details in the next 1 odd hour. We will talk about sectors like manufacturing and of course, the most important aspect of the budget as far as the income taxpayers are concerned, the changes in the personal income tax regime as well. Those will also be part of the discussion. Preeti? बिल्कुल, तो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर लगातार सरकार का जोर रहा है, मेक इन इंडिया पर लगातार सरकार जोर देती रही है। तो क्या बजट में इस बार उपाय किए गए हैं ताकि मेक इन इंडिया का जो सपना है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, वो कितना पूरा होता दिख रहा है, उसे कितना बड़ा पुश मिलने वाला है, ये हम अगले 1 घंटे में समझने की कोशिश करेंगे। टैक्स स्लैब्स में जो बदलाव हैं वो किस तरह से आगे भारतीय अर्थव्यवस्था को पुश देंगे और खास तौर से जो डायरेक्ट टैक्स में इस बार हमने देखा है कि रिबेट को लेकर जो एक तरह से स्लैब बढ़ा है, उसका किस तरह से फायदा मिलेगा, परचेजिंग पावर जब लोगों की बढ़ेगी, आम आदमी की जो आशाएं थी वो काफी समय बाद पूरी हुई है, किस तरह का बदलाव इसके जरिए देखने को मिलेगा। साथ ही हम जो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर लगातार बात कर रहे हैं विशाल, तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ अब चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उनके साथ। और जैसा मैंने कहा विशाल की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, मेक इन इंडिया को लेकर लगातार जोर रहा है और कोरोना महामारी के बाद जब कहा जाता है कि आपदा में अवसर को देखना, चीन की तरफ मुंहभंग दुनिया का, भारत के पास एक मौका ज्यादा है, किस तरह से उसे पुश दिया जाए, बजट क्या बता रहा है? Indeed, Preeti, and there's been a lot of focus on sectors like manufacturing, MSME, given the kind of announcements in the budget. And we have with us our guest as well, Raju Nawani is still with us. Rajuji, when we look at these particular sectoral allocations, and then when we try and understand as to what the budget has given, what kind of impetus are we looking at? Because it's not just the recovery phase which we have successfully navigated for the past 1.5 years, but also again laying that strong foundation for the next 25 odd years.
No, absolutely. I think the PLI scheme, that the government started, and now, extending that to new sectors, continuing some of those areas have really spurred manufacturing, within the country. And as we all know, a strong manufacturing sector drives tremendous job creation. I think the large spend that the government is making on infrastructure is also going to be the basis on which a lot more manufacturing will become competitive. Manufacturing competitiveness really comes from very, very strong infrastructure that a country needs to have. So I think all of that will result, in probably better exports. It will, definitely change the narrative. Today the world talks of a China +1 strategy and considers India to be, that +1. What if in 25 years we have an India +1 strategy for the rest of the world? Now, how do we navigate from where we are to where we want to be? And I think for that, manufacturing is definitely going to be a very, very strong base. Like I said earlier, the youth, the digital, the innovation, the entrepreneurship is also creating, significant amount of jobs. If our manufacturing and services sectors continue to accelerate that, I think we will be, the only people in the world who can cater to the, shortage of manpower supply that is going to happen. And, nothing takes away the fact that 1 in 10 people in the world today is an Indian under the age of 25. And that, kind of point comes only once in the lifetime or a history of a nation. So not only an Indian under the age of 25. And over the next 25 years, these are going to be the consumers, they are going to be the producers. The largest employable workforce is going to be these Gen Zs. I think 27% of the global workforce by 2030 will be Gen Zs. And if they are, skilled properly and enabled, right? We have a digital platform announced for enhancing skills. And if that can really take off from India, I think we will, propel ourselves at a much faster pace than what we have been doing so far. So truly excited about, some of the announcements that the budget has made. But the unique part will come when all of this really falls into place as small pieces, creating a virtuous cycle of growth. Indeed, Mr. Raju, that is true. All things are closely interlinked. And the way this intricate planning and allocation has been made, we'll have to understand it much better. We'll continue with our guests as well. We'll have a few more experts on the panel. But before we do that, let's also listen into Finance Minister Nirmala Sitharaman, her reaction after the budget. Vivad tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad se Vishwas 2, settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax. इसका सीधा प्रसारण आप अब संसद टीवी पर देख पाएंगे. Well, indeed, it's the customary reaction which will come in from the Prime Minister a few hours after the budget speech is delivered by the Finance Minister in the lower house and the budget document is placed in the upper house as well. Prime Minister, shares his thoughts with the nation on
the budget which has been presented by his government. So stay tuned. In just a short while, we'll hear from the Prime Minister himself. अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम। इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने आप एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की दूरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम
डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है,
नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। So there it is. You heard the Prime Minister himself summing up the budget, the key focus areas of this year's Union budget targeted at various sectors, various sections of the society as well. And we'll talk about all those sectors and sections throughout the rest of the day as well. Preeti? बिल्कुल। तो 2047 में जो समृद्ध भारत का सपना है, हर तरह से हम समृद्ध हों, हर क्षेत्र में समृद्ध हों और कहीं ना कहीं मजबूत नींव की निर्माण इस बजट ने कर दी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो बात कही, जो संबोधन दिया उसमें कही है और जनहित में कई कदम उठाए गए हैं। जो देश का निर्माण करने वाला छोटा छोटा व्यक्ति है, उनका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें मजबूत करने की कोशिश की गई है। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं जो इस समय चर्चा में जुड़ रहे हैं। यतीश राजावत सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर WTO IIFT, और साथ ही तमाम और मेहमान हैं जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सचिन शर्मा जी, आपसे शुरुआत करूंगी। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2047 का समृद्ध भारत है, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है और इस बजट ने कहीं ना कहीं उसके लिए एक नींव तैयार कर दी है। दुनिया भर की, जब मैंने जैसा कहा कि दुनिया भर एक आशा भरी निगाहों से देख रही है, G20 की अध्यक्षता इस समय हमारे पास है और आर्थिक सर्वेक्षण में भी हमने देखा था कि कवर पेज G20 को लेकर ही जारी किया गया था। तो वो जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों के लिहाज से किस तरह का बजट? अगर इस बजट को हम देखें तो ये अमृतकाल की नींव प्रस्तुत कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो इस बजट में है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर। आप ये देखेंगे इवन 2003 से पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग किया था और जिसका बेनिफिट कुछ टाइम बाद मिलता है और वो 2003 से लेके लंबे समय तक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हाई रही। यही इस बार जो बजट में 10 लाख करोड़ जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाएगा, ये एक नींव रख रहा है जो आगे आने वाले टाइम में इंडिया की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करेगा। इसके साथ साथ अगर आप G20 की हम बात करें तो आप ये भी देखेंगे कि इंडिया ने रिसेंट ईयर में एक लीडरशिप प्रोवाइड की है एट द ग्लोबल लेवल, चाहे वो वैक्सीनेशन का एक्सपोर्ट हो, चाहे फूड क्राइसिस के वक्त हम लोगों ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दूसरे कंट्रीज़ को हमने फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया हो। तो ये G20 में भी हमने काफ़ी कंट्रीज़ के नज़रिए से भी हमने बहुत बड़ी लीडरशिप प्रोवाइड की है। इसके साथ इंक्लूसिव ग्रोथ, फार्मर से लेकर मजदूर, वुमेन, ट्राइबल एरिया, इवन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से लेकर आप देखेंगे कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उन सब का ध्यान रखा गया, चाहे MSME सेक्टर हो जहाँ पे कंसेशनल लोन दिया गया है, जो जिस विश्वास से गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने इस बजट में महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इन्होंने खर्च किया है, इसके बेनिफिट आने वाले टाइम में हम देखेंगे और हमारी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ेगी। स्पेशली जब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी देशों में रिसेशन की स्थिति है जी और आने वाली है, और उस मामले में ये सही होगा कहना कि इंडिया विल बी a shining star among all the nations. Okay, indeed, those are the key focus areas. Yatish, I'd like to bring you in here, and given by the kind of summary which the Prime Minister presented, and also if you go back to the original approximately 90-minute odd long speech by the Finance Minister, and I'm sure you would have looked through the budget documents also in the meanwhile. Not fully. There can be several monikers which can be given to the budget. As the Prime Minister also spoke about green, focus on green areas. So green budget, can that be one aspect? People's budget, can that be another aspect? By people I mean workers. With the Prime Minister also specified about various sections of the society which are in focus, which need to be in focus if the economy has to move ahead for the holistic growth which we always talk about. So, the way I look at it, Vishal, is, he used the word foundation. Neev rakhi hai agle 25 saal. What is this foundation? If you look at it from economic terms, there are three parts of the economy largely, the agriculture, manufacturing and services.
For manufacturing, the last 2 years we have been giving a very important incentive, which is the PLI. So this year the focus has been on services and agriculture. On services, if you see, there are two big things the budget does. One is tourism. Now, tourism per se is the largest multiplier for any sector. Every dollar invested in tourism gives $7 of income downstream. Okay. So, and these are all services jobs. Okay. So they have said that they will identify 50 new destinations. Now, this is not an allocation in that sense, but the way they have structured it is that cities will have to rise up and challenge for this so-called scheme. Second is healthcare. You see the new hospitals, doctors, nursing, these are all new jobs. And healthcare, as we have seen in the last 2 years, is an important area for any developed economy to have. You cannot aspire to be a developed country till such time you have a healthcare which is equivalent to a developed country. Okay. But the other side of it is that healthcare is the only stable long-term employment option at the nurses level, at the caregiver level, and even at the doctor level for the country. 1/3 of doctors in US, the top hospitals there, are Indians. So they are now trying to bring healthcare as a priority sector again. Services. Similarly, on the agriculture side, there is a shift here. There are elements of the shift. One is the Shri Anna that he promised. Now, this Shri Anna has to be looked at from the prism of 3 layers. One is that millet is a non-fertilizer, non-chemical, organic produce, which breaks the water cycle of rice and wheat. And we're further building on our capacity here as well. We're the largest producers. We are the largest producer of milk. We were the largest consumer of milk. But what has happened over the last 50 years, we have given up this superfood and we have acquired habit of consuming obesity and diabetes inducing food like wheat and rice. Okay. Now, this is again a shift. He's rebranded at Shriyan, which basically gives it an aspiration value. He's classified it as a superfood. Okay, he's not classified as a poor man's food. He's calling it a superfood, and it is a superfood because it has low glycemic content. Okay. Now, these are building blocks in my sense. So the way that till now we were approaching agriculture from a infrastructure and sectoral point of view. Now we are approaching it from a slightly different view, which is produce, revamp the produce, create digital infrastructure, hence the focus on digital public goods there, which will enable marketplaces to form digitally. So I think this is a fundamental shift. One last point. Yeah, please. On the infrastructure side, and which I saw in the budget document, Prime Minister Awas Yojana has now become the largest scheme. An allocation of almost 79,000 odd crores. Now, as you know, Prime Minister Awas Yojana has changed. It is not the government which builds the house. So it has a multiplier effect. It has a multiplier effect, and it is again demand linked. It's not investment linked. So the government gives you money to make your house. It doesn't say that we'll build the house and you will come and stay here. You can build the house where you are. So it's a subtle shift. For years we have depended on Manrega to generate jobs. Okay. But Prime Minister Awas Yojana, both for the rural sector and for the urban sector, will generate jobs in both these areas for the lowest skill, which is the construction worker. So I think these on top of that, there is a layer of the whole capital expenditure. The private sector expenditure is lagging. We'll come to those aspects, Yatish. You've very in a nuanced way put out the building blocks which you're talking about, various sectors as well, and we'll come back to infra and manufacturing and MSME. But Mr. Chandrajit Banerjee from CII is also with us. Mr. Banerjee, welcome to Sunset Television. Of course, we would like to understand how does the industry view, but apart from this budget, but apart from that, the key question here would be, does the industry see this as a
move ahead, one more step ahead from the government, and how does the industry wants to match this pace? So I think you have put two sort of broad questions to me, and I would. The first one as to how industry sees this budget. Well, most of the things, or I feel that whatever we had asked for to be seen in the budget, we are seeing it. We are seeing both consumption and investment demand coming up from this budget. We have seen fiscal prudence in the budget. We have seen a very strong focus on how we are able to make things simple. That type of a budget. We are seeing a budget which is visionary, which takes India to a developed economy 2047 over the budget for the Amrit Kal. So all of that is very well seen, and also newer areas of focus of ease of living, creating employment, focus on sustainable growth, focus on sustainability of cities, focus on rural economy, and focus even on R&D and technology. So all encompassing, it's a very, very strong budget. Now, where will the industry invest? And that's the question. You see, government has been very bold during the COVID time. Just before COVID, when industry was picking up, the growth rates was high. I'm talking from the point of view of industry capex and industry investment. That's the time when we were hit with COVID, and government was aggressive in capex spending, and they kept it on. And to see that thrust from the government is a phenomenal focus. And not only the central government, it is also encouraging the state governments to spend on capex. And if you see the economic survey of yesterday, we also see that there is credit offtake which has increased, say for instance in the MSME. Now all the credit offtake means some of it is going on to additional investment. So private sector investment expansion has begun, and this will only trigger further investment from the private sector through the tremendous capex focus the finance minister has kept on. So it is a growth-oriented budget. We see stronger growth coming over a period of time. Okay. You spoke about the focus on infra capex, and of course the resultant effect on manufacturing and MSME out there. But we'd also like to understand from you, how does the industry see in terms of the potential for investment or growth in other areas where the government is giving a lot of push? For example, in agriculture, in rural areas, when we talk about developing storage capacity, digital in agri, which the Prime Minister also mentioned about, and let's not forget the green aspect of the budget, focus on green energy and various other green issues which the budget focuses on. So, one of the things which has started happening over a period of time in the last few years is a way to see how government and industry can work together towards taking India to a more developed economy. Projects which will be done together. There is a private-public partnership of a kind that we are seeing, and therefore opportunities for the private sector to participate in areas of rural infrastructure, in terms of in the rural economy, especially through digital, where there can be much more of private sector intervention, technology which can be brought in, the scope of investments coming in for the upliftment of people, the digital story of India, say for instance, to say as to how it has actually touched the common man and given an inclusion, included the private sector to help and to participate and invest, are very, very important stories for which India's growth story is strong. So I see much more investments coming from the private sector into core areas, be it manufacturing or into other areas. There will be so much of opportunities in areas like drones, say for instance, and even in different tech areas. So I see this budget to be a budget where private sector investments could be pretty strong, and not only Indian private sector investment. I see India becoming a strong destination for foreign direct investments to come in. India is already a sweet spot, but through these making matters simple
was something very important. We have seen focus on decriminalization. We have seen focus on ease of doing business. So all of this makes it a very attractive destination for Indian industry as well as for the global industry to be working here. Indeed. So there are a lot of avenues, as you're pointing out, when we're talking about the application of technology in various sectors as well. Thank you so much, Mr. Banerjee. We also have with us Mr. Adil Shetty, who's joining us. He's the co-chair of FICCI FinTech Committee and also the co-founder and CEO of bankbazaar.com. Mr. Shetty, you know, when we're talking about application of technology, of course, in terms of fintech sector, what were the expectations, and where do you or the fintech industry analyzes various aspects of this budget? That's one part, but the other more important part, as I was asking Mr. Banerjee as well, the application of technology to newer areas, newer domains as well. Yeah, absolutely. You know, we've been talking a lot about the 10 lakh crore capex push for physical infra. But if you notice, the FM spent about 5 minutes talking about digital public infra. And she emphasized, right, how UPI payments now are over 700 billion digital payment transactions in India per year. Here are the key aspects she touched upon. She spoke about simplified KYC, saying that Digital India needs a push. All financial regulators will look at simplified KYC. She spoke about DigiLocker, very unique global platform. 128 million Indians have a DigiLocker account. She said all document types will be integrated into DigiLocker for easy sharing. She said to ease credit, one-stop verification of address using DigiLocker and Aadhaar. And she spoke about 3 centers of excellence for artificial intelligence. I think the messaging is very clear. Digital public infra, digital development is an opportunity for India to leapfrog. If you look at yesterday's economic survey, what was said in it is that Indian GDP can rise by 1% if we are able to harness the benefits of digital public infrastructure. So big thrust on digital infra as they have given a thrust to physical infra. बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर महेश गुप्ता भी जुड़ गए हैं, सीएमडी हैं केंट आरो के। एक रिएक्शन बजट को लेकर उनसे भी लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। आप अपने नज़रिए से बताइए, आपकी इंडस्ट्री को क्या मिला है भारत में कंजम्पशन के लिहाज से, और साथ ही जब हम एक्सपोर्ट को लेकर बात करते हैं, क्या हासिल हुआ है बजट में? बहुत अच्छा बजट आया है। इंडस्ट्री में देखें तो खासकर एमएसएमई को बहुत फायदा मिला है इस इंडस्ट्री के अंदर। एमएसएमई के अंदर एक लोन्स 2 लाख करोड़ के लोन्स एक्स्ट्रा एमएसएमई को मिलने वाले हैं। एमएसएमई में 3 लाख तक के टर्नओवर के ऊपर एक इनकम टैक्स के लिए आपको कोई अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं है। एमएसएमई को पैसे एकदम से मिलेंगे उनके लिए। अगर आपने एक बड़ी कंपनी ने अगर उनसे ट्रांजेक्शन किया, अगर पैसा उन्होंने नहीं दिया उस कंपनी का, तो उसको वो एक्सपेंस नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो एक एमएसएमई इंडस्ट्री को बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है इस बजट से। जहां तक एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम लोगों का फॉरेन करेंसी के डिमांड के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होता है। अभी इस वक्त इंटरनेशनल लेवल सिचुएशन खराब है। यूएस के अंदर हम लोग देख रहे हैं बहुत फायरिंग हो रही है लोगों की। यूरोप के अंदर अभी पोजीशन खराब है, गैस की पोजीशन की वजह से डिमांड कम है। तो मैं एक्सपोर्ट में तो कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं देख रहा हूँ, बट की भी एक रेट ऑफ टैक्सेशन कम किया गया है। तो हर एक आदमी के हाथ में एग्रीकल्चर के अंदर पुश मिला है, और आपको आवास योजना में पैसा खर्च करने को मिलेगा। तो वो सारा पैसा जब लोगों के हाथ में आएगा तो डिमांड जनरेशन होगी, और डिमांड जनरेशन होगी तो इंडस्ट्री पूरी रिवाइव होती है और ग्रोथ स्टोरी उसकी बढ़ती है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ इससे जो हम लोग का 7% का ग्रोथ है, ये धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। ये सही इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। और आइए अब थोड़े से और रिएक्शन सुन लेते हैं। बजट के बाद क्या रिएक्शंस रहे हैं संसद भवन के अंदर, आइए सीधा आपको सुनाते हैं। I think about fiscal deficit and the GDP was very well and nicely placed by the Honorable Finance Minister. She did show up the plan step by step. We are very happy the middle class has got that support, which has always been spoken but not done. And this government
showed it that they are here as with Saptarshi for every class, every caste and every gender. Oh, that's great for the common man, and I think that it's a historical move as well, and I'm sure I think people from a middle class will definitely benefit from this. It is helpful for the middle class and the poor section of our society. Look, some of those things are good. I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of Manrega. What are we going to do about the poor rural labor? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. I want to thank Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Nirmala Sitharaman ji for the massive announcement of the 5,000 crore rupees project for the Upper Bhadra irrigation project. From a very long time, many North Karnataka districts were struggling for even drinking water. This project is going to be a game changer. I thank the Honorable Prime Minister for this very important announcement on behalf of the people of Karnataka. Comprehensive, all-encompassing, from farmers to women entrepreneurs, to fishermen, to tribal, to digital, what not. An exemption to the middle class in a very big way, from rubber planters to sugarcane growers to cooperative to skilling. As I said, and above all, the exalted, respectable name given to Shri Anna, Ragi, Bajra, Jawar. That is the true vision of the Prime Minister. Sabka Saath, Sabka Vikas is what this. Definitely, there's been a benefit for the taxpayer in general, right from the lower slabs onwards and even to the higher slabs. And every time we've seen this in the past, it's improved tax compliance. So I expect that in spite of the reduction in tax rates, that there will be increased compliance and therefore an increase in collections is what I expect. So there it is. You heard reactions from various members of the parliament on the budget presented by Finance Minister today. We also have with us, since most of the members were also speaking about, what the Finance Minister has done vis-a-vis the personal tax regime. We have with us Mr. Ambrish Saha, is partner Deloitte and tax expert as well. Mr. Saha, we would like to start with a very simple question. If you could explain to our viewers, what is it that they have got in the budget when we talk about the personal tax, direct tax rather? Yeah, so I think clearly, any income up to 15 lakh rupees, is something that individuals have benefited because of the lowering of the tax rate and the moving of the slabs. So if I were to look at a lower end, at 9 lakhs assume, I think there is a 15,000 rupees saving, and if I move right up to the 15 lakh area, then the tax saving moves up to almost 37,500 rupees. So every individual in that level up to 15 lakhs has got benefited from this. But I think the benefit will also go at the higher levels, because the surcharge rate has been dropped significantly by 1/3 from 37.5 to 25. So, income brackets above 5 crores or about 2 crores will also get benefit, because of this surcharge rate drop. So I think it's at both ends of the spectrum from a personal tax perspective. But Mr. Saha, the key point here is that this is under the new tax regime. So is this also an indication that the government is making a subtle push towards the new tax regime as well? Because no such relief in the old tax regime. Absolutely. I think, when the new regime came, I think there was a gentle push. This makes it even more profound in terms of the push. And I hope that, with this, there will be more and more individuals who will move to the new regime because of the benefits that it will give. बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं फेज वाइज हटाने के लिए जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, कहीं ना कहीं न्यू टैक्स रिजीम को थोड़ा आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है। और कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर सैलरीड क्लास की बात कर रहे हैं और पेंशन भोगियों की बात करें हम अमरीश जी, तो इसके लिए न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के लाभ को भी बढ़ाया गया है। सीनियर सिटीजन्स को कितना लाभ होगा इससे? सो आई थिंक इससे जो है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ गया है, तो उससे 52,500 तक उनको लेके गए हैं, जो न्यू रेजिम में जो पहले नहीं था। तो आई थिंक उसके ऊपर भी उनको, अगर आप 15% भी एवरेज टैक्स रेट गिन लीजिए, तो और 7,500 रुपया करीबन उनको लाभ मिल जाएगा।
और जो इनकम टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 6 की गई है, इसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? सॉरी, वापस जरा आइए, आई कुड नॉट हियर जो यू। स्लैब की संख्या है इनकम टैक्स में पहले 7 थी, जिसे अब कम करके 6 कर दिया गया है, तो ये किस तरह का असर है, कदम क्यों उठाया गया है? तो इससे क्या होगा कि जिसकी इनकम लेट्स से 7 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है, उनको ज्यादा फायदा होगा। जैसे आप 15 लाख की तरफ आ रहे हो, आपका एवरेज टैक्स थोड़ा बढ़ते जाएगा। 15 लाख के ऊपर कोई चेंज नहीं है। तो आई थिंक इट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। जो 5 लाख के ऊपर टैक्स भर रहे थे, अभी वो 7 लाख तक टैक्स नहीं भरना है उनको, तो उनको लिए जीरो टैक्स हो गया। 7 लाख से 15 लाख के लिए आपको बेनिफिट हो गया ओवरऑल। तो दोनों हिसाब से आप देखो तो 15 लाख तक जिसकी इनकम है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। So a comparative analysis, Mr. Saha, before we let you go, for the viewers to understand, is it still a better option, the new tax regime, after these changes made in the budget for the average taxpayer up to that particular level, say around up till 15 lakh, vis-a-vis the old tax regime we're talking about? I think it will depend on each individual and their particular fact pattern. तो उनको दोनों कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, देखने के लिए कि कौन सा उनके लिए बेहतर है। बिकॉज वो पुराने में कोई डिडक्शंस मिलते हैं जो नए में नहीं मिल रहे हैं, और उन्होंने ये टाइम बहुत डिडक्शंस भी निकाल दिए हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम, वो निकाल दिए हैं। तो मेरे हिसाब से नया रेजिम बेटर ही रहेगा। Okay. So clearly a subtle move towards the new tax regime as Preeti looks like और एक नया फॉर्म अब पूरी तरह से होगा। एक जो मिडिल क्लास को राहत की बात कही जा रही थी, बहुत लंबा इंतजार। हालांकि सरकार ये समझाते रही कि डायरेक्टली टैक्स में हम कोई रिबेट को इंक्रीज नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली हम आम आदमी को फायदा दे रहे हैं। कितनी बड़ी राहत है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा दिया है, और मतलब जो टैक्सेबल इनकम है उसको भी 5 लाख 7 लाख कर दिया है। मतलब जो डायरेक्शन है वो क्लियर है कि आपको नए टैक्स रेजिम की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि जो डिडक्शन और इंसेंटिव थे पहले, उससे पेपर वर्क ही बढ़ता था। मतलब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं या वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका कोई मतलब सरकार को कोई लाभ नहीं होता था। तो उसको सरकार उस पूरी सिस्टम को हटाना चाहती है, और चाहती है कि आप नए टैक्स regime में ही आ जाएं। How will this impact the savings part? Because to claim deductions, the income tax paying, most of them used to save just to claim deductions. So one saving was that you were investing in insurance. So now that is the thing, that you should not invest in insurance for saving. Insurance is a risk product. It's not a saving instrument. It's not a saving instrument. Neither is it an investment instrument. It's a risk instrument. So you are investing in it because इतना जागरूक है हमारा। अब ये तो फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसका इंसेंटिव नहीं हटाएंगे, तब तक लोग सोचेंगे कि हाँ इसमें तो पैसे बनते हैं हमारे। तो पैसे बनने का कोई तरीका नहीं है उसमें। इंश्योरेंस में तो मतलब ये गलत चीज थी कि उससे पैसे निकालते थे लोग, बोनस देते थे, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए इंश्योरेंस में। Okay. We'll come back to this part again. Mr. R. Dinesh, President Designate CII, is with us. Mr. Dinesh, welcome to Sunset Television. We were just now talking about the tax structure, of course, the direct tax structure, person taxes, but there is a lot of relief which has come to the HNIs as well in terms of rationalization of taxation rates there. So that aspect, how will that impact? And it's not just about the HNIs, when we look at the industry also, there seems to be a lot of measures which have been taken place. Yes, thank you. And I think it's, I would call it a very well balanced approach. So it's very inclusive, make sure that I would call it required sectors are taken care of. And I think what you said is very correct. This actually will spur growth in two ways. So I call it as a virtuous cycle. In fact, I think the finance minister mentioned that. On one side, you have the focus on infrastructure and the capex which goes with it. And on the second, you have more money being available to be able to spend. So you have domestic consumption going up, and on the other side, you have money coming in thanks to the capex which is taking place. So I would call it as a very pro-growth budget which benefits all sections of society, so therefore inclusive, and also offers an opportunity for higher job creation because of the infrastructure spending and the capex being taking place. Okay. So you spoke about infrastructure spending and that higher, capital expenditure there. Focus on urban infrastructure there, it looks like, and then larger, not only just larger projects as well. There seems to be a lot of impetus to
MSMEs also. So the entire, system needs to move in tandem. Yes, I think this has been also one of the requirements or asked from an industry perspective, especially considering that during the COVID period and post, I think there have been, I would call it, significant strain on the MSMEs and also the smaller businesses. So I think there are two aspects to that. One is the fact that the Vishwas scheme, which has been introduced, which allows them to be able to get the monies back very quickly. But more importantly, if you look at the focus, it is not just on, I would call it, the tier 1 cities. It has been very clearly mentioned that including for the state funding, it is going to be focused on the tier 2 cities, and wherever the state government is going to spend, the backup has also been given, especially for the municipal bonds and other urban bodies. So my view is this is giving a rare opportunity for the smaller businesses which are present in rural markets, which have had issues of making sure of being able to do business with the government, being protected, and having a one-time benefit wherever they have had issues thanks to COVID. Okay. So I think this does pave the way for them to have a, I would call it, quick growth, and also make sure they're able to realize their dues faster. Last point I want to mention there, not just from MSME's perspective, but as industry, is that as I mentioned, the capex-led growth is not, these are all not projects which are taking place only in urban areas. If you look at the 50 key infrastructure projects which the finance minister mentioned about, which will be fast-tracked and followed through, that itself are areas which are mostly in the outlying areas of the country. So the first mile, last mile point which the finance minister mentioned, and the fact that the support to the state governments and the infrastructure support to rural areas, I think will mean much better times for the MSMEs. And I think one other factor I have to mention is the ease of doing business point. Okay. So the focus on not just rationalizing the laws, but also removing the decriminalization or making it not draconian in nature is something which has been again an ask for the small scale sector. So these three coming together, I would say, helps position the country and the small scale sector to able to come back to their growth and kind of get to the growth path. Okay, Mr. Dinesh, one more aspect, before we let you go, and that is also very important for us to understand that do you believe that the rejig which has been done in the customs duty regime of various commodities and products as well is enough to give that required push to domestic manufacturing, or something else might also be required along the way? No, I think there are two elements to this. I mean, I would not look at the customs duty rejig as a standalone action, right? The focus is on making sure that manufacturing for the globe takes place in India, and obviously there will also be domestic consumption taking place. So if I look at that as the base, I think the fact that the PLI schemes have been introduced, that there is focus on making sure that the manufacturing shifts to India, and then if you overlay that with the specific exemptions which have been given, and I don't know the full details of it because I have to go through the budget in detail to be able to arrive at that, but at least from a prima facie reading of it, they are all specific asks for reduction in duties which enable Indian manufacturing to become more competitive for us to become part of the global supply chain. So if I overlay these two together, that is the PLI focused manufacturing to become India to become a hub for global exports, and on top